In this module, you will learn how to calculate heights and distances using trigonometric ratios. In everyday life, we come across many buildings, monuments, and other structures. The heights of these structures can be found using trigonometric ratios. Let's review some basic terminology associated with finding heights and distances. Suppose an observer is looking at the top of a tower. The line joining that object and the eye of the observer is called the line of sight. The angle between the horizontal line and the line of sight, which is above the observer's eye, is called the angle of elevation. Suppose the observer is standing on the edge of a cliff and observing a boat on the water. The line of sight will be as shown. Here, the angle between the horizontal line and line of sight, which is below the observer's eye, is called the angle of depression. Let's see some examples on how angles of elevation and depression can be used to find the heights of the objects. A pole of height 25 meters stands vertically on the ground. The angle of elevation of the top of the pole from an observation point on the ground is 45 degrees. We have to find the distance of the point from the pole. Let Mn represent the pole and the point from where the top of the pole is observed be P. The angle of elevation from point P to the top of the pole is 45 degrees. We need to find the distance of the point P from the foot of the pole M. Here, triangle NMP is a right-angled triangle. In the triangle, tan 45 degrees is equal to Mn divided by MP. Let's substitute the value of Mn. Mn is equal to 25 meters. The value of tan 45 degrees is equal to 1. Rearranging, we get the value of MP, that is, the distance of the foot of the pole from the point, is equal to 25 meters. Let's look at another example. A boy standing on a tower observes a ball on the ground at an angle of depression of 30 degrees. The ball is located 60 meters from the foot of the tower. Let's find the height of the tower using the angle of depression. Let AB represent the tower. The ball is located 60 meters away from the foot of the tower. The boy observes the ball at an angle of depression of 30 degrees. When this line is joined, a triangle is formed. Here, the side AC makes an angle of 30 degrees with the horizontal AP. Considering the side AC
as the transversal of parallel lines AP and BC. Angle ACB and angle PAC form a pair of alternate angles. Hence, they are equal. Therefore, angle ACB is equal to 30 degrees. In the triangle ABC, tan 30 degrees is equal to AB divided by BC. Substituting the values, tan 30 is equal to 1 by root 3 and BC equal to 60 meters. We get AB by 60 equal to 1 by square root of 3. Rearranging the expression, we get AB equal to 60 by square root of 3. On simplifying, we get 20 multiplied by square root of 3 meters, which is the height of the upper part of a tree is broken by the wind and touches the ground, making an inclination of 30 degrees at a distance of 10 meters from the foot of the tree. Find the height of the tree before it was broken. From the figure, let the two broken parts of the tree be AB and AC. Given that the angle of inclination from C is 30 degrees and the distance between the foot of the tree and the broken part touching the ground is 10 meters. Assalamu alaikum students, hope you are doing good at home. We are at our very next chapter, which is applications of trigonometry. Firstly, I will introduce this chapter with the few examples that we use in our daily life. The applications of trigonometry are a lot. It's used examples. Trigonometry is used in oceanary. For example, in oceans, when we have the heights, we want to measure their heights, we use trigonometry. It is not easy to calculate those heights manually, we use trigonometry. Also, during electromagnetic waves where we use sine cos, we use trigonometry. And the most important thing, in order to obtain the heights of the very large buildings, we use trigonometry. Just leave the buildings aside. For example, if we look at the mountains, अगर हमारे पास फर्ज करो माउंट एवरेस्ट है, उसकी हाइट हमको कैसे पता चली? थ्रू ट्राइगोनोमेट्री. मतलब आप मतलब ये इंसान ने आज तक ये सुना कि माउंट एवरेस्ट की हाइट इतनी है, लेकिन वो कैसे हमें पता चला? थ्रू ट्राइगोनोमेट्री. मतलब माउंटेन्स की हाइट निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ट्राइगोनोमेट्री. These are the few examples I give. During the construction of our houses, for example, we have to form the roof, we use trigonometry. इसी तरह हर बहुत सारे जगह हम ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करते हैं और बहुत सारों ने ज़िंदगी में ट्रिग्नोमेट्री यूज़ भी की है, but we don't know we have used the trigonometry. For example, if a person will see the largest building in the world, which is Burj Khalifa, तो उसको वो मेजर करनी है उसकी ये हाइट. तो एक इंसान जिसने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी नहीं होगी, वो क्या बोलेगा उसको? आप बुर्ज खलीफा के ऊपर चढ़ो और एक रोप है उसको डालो ये नीचे, फिर आप ये रोप को मेजर करो. बट इट इज़ नॉट द गुड वे. इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. और फिर कैसे वो मेजर करेगा, फिर कैसे वो रोप को नीचे छोड़ेगा? इससे अच्छा है वो यूज ट्राइगोनोमेट्री. ऐसे ही जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं,
माउंटेन्स होते हैं जिनकी हमें हाइट निकालनी होती है, वो यूज़ ट्राइगोनोमेट्री। ये कुछ few examples I gave which we use in our day to day life। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि मैथमेटिक्स इज़ द रियल, जो हम ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं, जब भी आपको एप्लीकेशंस यूज़ करनी है तो ये 4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक हॉरिजेंटल की लाइन, और दूसरा ये लाइन ऑफ ये साइट, और उसके बाद आई विल रिमूव सम ऑफ द थिंग्स हियर। पहले हॉरिजेंटल ये लाइन, फिर ये लाइन ऑफ साइट, फिर एंगल ऑफ एलिवेशन, फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर ये 4 चीज़ें हमने सीख ली तो एप्लीकेशंस विल बी वेरी सिंपल फॉर ऑल ऑफ अस। जब ये 4 चीज़ें ये समझ आएगी, इनफैक्ट यू कैन measure any height which you want to measure from your hands. For example, the first thing here is horizontal line। हॉरिजेंटल ये लाइन किसे कहते हैं? हॉरिजेंटल ये लाइन का मतलब है हॉरिजेंटल लाइन का मतलब है जब भी एक पर्सन देखता है और अपनी आंखों को वो कोई मूवमेंट न एलिवेट करता है और न डिप्रेस करता है, जब भी वो देखता है इस तरह कि जो उसकी ये साइट है वो पैरेलल हो टू द ग्राउंड, हम बोलते हैं उसको हॉरिजेंटल ये लाइन। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, पैरेलल टू द ग्राउंड होनी चाहिए। मतलब एक इंसान है अपनी जगह, उसने इस तरह देखा तो इसकी ये साइड पैरेलल है टू द ग्राउंड, वी से इट इज़ द हॉरिजेंटल लाइन। इट इज़ द सिंपल। ये हर दिन इंसान है वो सीधे, जैसे आप आई विल गिव ए सिंपल एग्जांपल। व्हेन यू आर टेकिंग ए फोटोग्राफ in front of the photographer, what you do, if the camera is in front of you, you will see towards the camera, हम बोलते हैं ये हॉरिजेंटल ये लाइन है। उस टाइम क्या होता है, जो हमारी ये साइट होती है वो पैरेलल टू द ग्राउंड होती है, दैट इज वी कॉल्ड एज हॉरिजेंटल लाइन। उसके बाद है ये लाइन ऑफ साइट। ये लाइन ऑफ साइट का मतलब है कि एक इंसान है, उसने अपनी इस साइड को या तो एलिवेट किया या तो डिप्रेस किया। एक इंसान ऐसे देख रहा है, ये पैरेलल टू द ग्राउंड है, वी कॉल दिस हॉरिजेंटल की लाइन। अब अगर ये थोड़ा अपनी आंख को इस तरह एलिवेट करेगा तो वी से इट इज ये लाइन ऑफ साइट। इसका मतलब ये लाइन ऑफ साइट कभी एलिवेट इस तरह भी होती है और ये लाइन ऑफ साइट इस तरह भी हो सकती है। अब अगर हमारी ये हॉरिजेंटल ये लाइन है, मैं आपको थोड़े एग्जांपल यहाँ ये दूंगा। फर्ज करो एक इंसान इधर है, ये उसकी हॉरिजेंटल ये लाइन है, हॉरिजेंटल ये लाइन। और फर्ज करो उसने अपनी आंखों को एलिवेट किया। यहाँ में फर्ज करो यहाँ में ये लिखूंगा, ये है लाइन ऑफ साइट। यहाँ फर्ज करो ऑब्जेक्ट है, ये देख रहा था ऑब्जेक्ट की तरह, जो यहाँ पर ये एंगल बन गया इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक ऐसे ही एक इंसान इधर है, ये उसकी हॉरिजेंटल ये लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन। ठीक, अब फर्ज करो उसने नीचे की ओर देखा। ठीक, ये क्या उसकी बन गई, ये लाइन ऑफ साइट। तो यहां पर जो ये एंगल बन गया इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ
depression. Now I will give you a solution to find the height of Burj Khalifa. ठीक? For example, if we will consider this as Burj Khalifa, ठीक? And we are here. What is this? This is the horizontal line, and we are seeing at the topmost part of Burj Khalifa. And what is this? This is line of sight. What is this? This is horizontal line. We want to find his height. Okay, I am just showing you how to apply now, how to find the values. This is the angle. For instance, we name it as AB and this is C. Fine. Suppose we are 500 meters from Burj Khalifa, and from any source we find the angle is 60 degree. Then what we have to find? Now you all know the trigonometric ratios. This we know, this we have to find. Which trigonometric ratio gives you perpendicular and base? Either you can use cot, either you can use tan. And 60, it's perpendicular by base. It's root 3 into 500. It's AB. You can find it. Now I showed, but one important thing I have to tell before concluding the brief introduction to this chapter. I will tell you one thing, that whatever the height we want to find, it must be perpendicular with the ground. For example, this is the building, or this is any tower, but it is not perpendicular. You can't use trigonometry here. It must be perpendicular, and we can find any height. Hope you got all these definitions and these criteria into your mind. God bless you all.